चित चोर प्रभो जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna, I welcome you all the devotees who love to participate in the Bhagavatam Katha. I especially heartfully welcome all the senior devotees and Vaishnavas of the International Society of Krishna Consciousness Iskcon, and all of you who have gathered here from all parts of the universe through the various medium of YouTube, Facebook, Zoom, etc. I welcome all the listeners and especially the host family, that is the Patni family, in which the men are Praveen Bhai, Ranjan Ben, Ramesh Bhai, Murli Ben, and from Australia, Arvind Bhai, Indira Ben, and from Nairobi, Shobha Mata, and the interconnector who has joined all of them is Yogesh Bhai. So this katha has been organized in the loving memory of their ancestors, that is Damji Bhai and Dudi Mata, Anji Bhai, Damji Bhai, Jaya Ben, Chotu Bhai, Jasu Ben, and Prabhudas Bhai. So in the loving memory of these ancestors, they have organized this beautiful katha. I welcome you all on the day 2 of this katha. I welcome you all and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. હરી બોલ. સારું છે ને? તબિયત સારી છે ને? જય. इन सब वडीलों के आशीर्वाद से ही तो कथाएं, by the blessings of such seniors, we are able to perform or do these Bhagvat Kathas. We are extremely fortunate that we are in the shelter of Shrimad Bhagavatam, and we are listening to the pastime of Mata Shabari, who is a Mahabharat herself. I'm extremely elated because the kathas are, or the pastimes of the Lord, are always discussed, but in all these pastimes or kathas, the complete justice is never given to Shabari's pastime. At most, they tell her about her in 15 to
minutes to 30 minutes, but by हम सब the लगातार help of Patni family, we are going to listen about the pastimes of Shabari Mata प्रकाश डालेंगे for 7 days. और शबरी माता को This समझने is का our प्रयास humble करेंगे। try to understand about her रामायण में more. तो शबरी चरित्र का वर्णन है ही, She is mentioned परंतु बड़े in विस्तार से Ramayana, no शबरी doubt, चरित्र को but गाया in detail, भारत के her संतों ने। pastimes has been हमारे discussed भारत by में our तो संत saints. दिए, जैसे महाराष्ट्र ने तुकाराम दिया, Our India महाराष्ट्र ने or कबीर Bharat सिंह has दिया, given many saints. Maharashtra गुजरात gave ने Tukaram, नरसिंह मेहता को दिया। Gujarat gave Narsi Mehta. ठीक उसी प्रकार है, So similarly, राजस्थान ने भी एक बहुत बड़ा so संत दिया। Rajasthan also gave us a भारत great, के great राजस्थान saint. में एक महान संत हुए। There was a great अब इस संत के Vaishnava विषय or में saint आचार्यों ने बहुत बहुत कुछ लिखा, in बहुत कुछ Rajasthan. कहा। It कभी has समय मिलने been पर मैं आपको विस्तार से told बताऊंगा। about him in detail. लेकिन इस संत का जन्म Whenever I get an भारत के opportunity, I will राजस्थान में tell हुआ, about उसी him दिनों इनका जन्म हुआ। as well. But when he राजस्थान में was बहुत born in परेशान हो गया था। Rajasthan, that was a difficult time जन्म से in ही संत Rajasthan. अंधे थे, He was आंखें blind नहीं since थी, his birth. देख नहीं पाते थे। He was unable to see around the पिता world. की मृत्यु हो गई, His तो father माँ died, अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही है। and his mother was taking care of him. अब दुष्काल हुआ, गांव में खाने की कमी हो गई। And due to वह माँ the अपने बालक difficult को लेकर एक times गांव or से drought, दूसरे गांव, तीसरे there गांव, was shortage of food कई supply. दिन बीत गए, So they roamed from one village to another in रोटी का search एक of निवाला, food. न माँ के For पेट so में, many न days, उस बच्चे के पेट में। they didn't got anything to eat. एक पेड़ के नीचे उस 5 साल And के अंधे बालक को बिठा they were कर sitting वह under माँ the भोजन tree, बटोरने जाती है। and the mother कई went दिनों से भोजन नहीं करने in के search of कारण food, माता की भी मृत्यु हो जाती है। and the mother also dies. कुछ देर के बाद वह बालक After some time, that चिल्लाता है, child माँ माँ माँ, cries लेकिन माँ आती नहीं है। vehemently and calls for आंखों his से mother, अंधा but है, she doesn't come. माँ He की is आवाज में blind. He बालक रो couldn't रहा है। listen to his mother's voice. लेकिन भक्तों, But जिसका कोई नहीं devotees होता, in this उसका world ईश्वर होता who है। has no one, the जगत Lord जब is still सहारा there नहीं for देता, him. When this जगदीश world को प्रकट doesn't होना पड़ता है। suppose, then the Lord वैसा ही himself कुछ हुआ। manifests. And that is what happened वो here. अंधा बालक, 5 साल का वो अंधा बालक, एक तो भूखा That था, ऊपर से 5-year-old माँ नहीं थी, blind रोता child था, और who was उसी समय crying दो संत, दो साधु भगवत for his गीता mother. वहां से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उस बालक पर So पड़ी। the two उस sages बालक were को सोचा कि walking through the लगता है same इनकी माँ path. मर गई होगी, उस बालक को अपने And साथ लेकर so चले। these two Brahmins, when they बालक तो realized बहुत that सुंदर maybe है। his mother is dead, अब they तो वो took बालक उस संतों him के समाज में along उठता with him. बैठता, So खाता this पीता, बस boy's संतों के destiny साथ was में रहता, completely और changed. संतों के आशीर्वाद से He got the कहते association हैं कि of उस these बालक की आंखें आ saints, गई। and by जब से वो their बालक बोल नहीं पा mercy, रहा था, the साधु child संतों की who कृपा was से born उनकी blind, आंखें आ गई। just by the mercy and कौन association लाएगा of इसकी आंखें? devotees, he got his eyes भाग्य back. की रेखा को कोई So, नहीं बदल सकता। so now there is I should भक्ति mention सिद्धांत it प्रभुपाद that जी लिखते हैं, nobody एक चींटी can से लेकर इंद्र और change ब्रह्मा तक our को destiny. अपने-अपने कर्मों की सजा In Brahma Samhita, Lord हम Brahma सबको says भुगतनी that पड़ती है। we all have to bear the लेकिन consequences यदि or कोई सच्चा suffer संत, for our कोई सच्चा साधु deeds. चाहे, But तो if वे we get हमारे the भाग्य mercy की of रेखा भी बदल सकता association है। of a true Vaishnava भक्ति or a गीता saint, इसका गवाह है। then they can change हम our हर एक destiny संत as का well. तो प्रमाण And करेंगे, लेकिन मैं there कहूं are ना आपके सामने, multiple examples of नारद जैसे these संत की कृपा से in Bhagvatam. हिरण्यकशिपु की But पत्नी कयाधु का भाग्य बदल the गया।
one I want to especially mention here is by the association of Narad Muni, Hiranyakashipu's wife Kayadhu gave birth to the greatest devotee of the Lord, and this was made possible only by the mercy or association of Narad Muni. So usually a child is born in 9 months, 11 months, and for a great Shukdev Goswami took 12 years, but this boy Prahlad, which was in the womb of Kayadu, stayed there for 36,000 years and got the association of Narad Muni by his mercy. And the great devotee Prahlad Maharaj was born. So if a true Vaishnava bestow their mercy on us, then they can change the destiny. They have that capability to change the actions of our deeds or karma. So this boy started staying with these saints and he got his eyes recovered. He was able to see. He got the divine vision. And amongst these sages, he became a disciple of Saint Agradev. So he always served his Guru Agradev. It's a huge pastime. So we can even perform a katha of this saint for 7 days. So one day, this boy, he was serving his Guru Agradev and he was fanning his Guru. There was one time when in villages people used to fan each other. So even today we fan Thakurji. So he was fanning his Guru, and while Agradev was memorizing about the Lord, and the other disciple of Agradev was very rich and he was a merchant, so he got stuck in the sea and he remembered his Guru and asked his mercy to save him from this situation. So Agradev ji, who was in memory of the pastimes of the Lord, got disturbed and he got worried for his disciple. So when this boy who was fanning his Guru saw these expressions changed and he realized that there is some breakage in the reverie, and so he saw that his god brother was stuck, and because of that Guru Maharaj is not able to concentrate or focus on the Lord. So while fanning to the Lord, so as he fanned, he fanned towards his god brother, and that god brother was saved, and the Guru Maharaj realized that this was done not by anyone else but his own disciple. Agradev was
astonished that I always thought this disciple as an ordinary person, but he is not. He understands my mood, and he not only thinks about my distress, but also he is capable to remove my distress. So Agridev told that you are a divine being, and by divine mercy you have got your sight. So I want to give you some service. So he said that till date, so many people have written about the pastimes of the Lord. People have written so many books upon books about the Lord, but nobody has written about the great exalted devotees of the Lord. So you have this divine vision, so you should write about these great devotees of the Lord. So this disciple told that I am not qualified and not capable, but Gurudev Agridas told him that I will give you the divine vision. The Lord will give you the divine vision. You will be able to see the pastimes of these exalted devotees of the Lord. And you just need to write what you see. And then by the order of his guru or spiritual master, he started writing. His Guru Maharaj left the world, but he kept on writing, and he is none other than Sri Nabhadas Maharaj Ji. So this Nabhaji has written about innumerous devotees of the Lord by just seeing these pastimes in his divine vision and express them in detail. And then later, Priyadas elaborated this in beautiful language. So in future, whenever we get a chance, we will try to listen about them more. So I just now told you about Nabhaji. So the first verse that he wrote, which is connected to Shabari Mata. So now you are fully aware that whatever the topic, so we'll discuss that topic alone. So such a great devotee of the Lord, when he started writing about the devotees of the Lord, so he first performed the veneration or Mangalacharan of the Lord. So let's bow down at the lotus feet of Nabhaji and listen the verse in front of your screen. वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाधरी। गाइए। हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाधरी। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। नाभादास जी ने इस छपाई में बहुत सुंदर लिखा। So here Nabhaji in this chappai has written beautifully, and it's not any ordinary thing, it's extraordinary. So we will elaborate this and try to understand in detail.
So the basic translation is that I bow down at the lotus feet of all the exalted devotees of the Lord, and I take the shelter of the lotus dust of these devotees. But if we try to listen in detail, then it becomes extraordinary. So the first word here is Hari. So I want to ask you, whenever you see or hear this word Hari, then what do you imagine? So let's ask the host. Let me ask Yogesh Bhai. So whenever you hear Hari, then so what do you imagine? हरि शब्द से आपको क्या इमेजिन होता है? मुझे नहीं लगता है गोविंद टीवी किसी को मौका देगा. ताला I don't think बैठते हैं वो बेचारे माइक भी ऑन नहीं कर पाते. जब हम हरि शब्द सुनते हैं ना तो एक तो whenever we listen to हरने वाला, भक्तों की Hari, चिंता को हरने वाला, भक्तों के दुख को we हरने वाला, understand that the Lord who removes the obstacles, distress, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा and problems of the devotee. But if I share what I feel, then the first thing I remember is the Hari who steals the heart of the Lord, who steals the heart of his devotees by his beauty, his pastimes. He steals the heart of the devotees. So the basic is that the Lord will or should remove our obstacles, but that is very small thing to desire. But Hari is the one who steals the heart of his devotees. He's so beautiful that he steals everything of the devotee. So here he says Hari, but not only Hari, but there is the word Vallabh as well. Hari means Bhagwan. Vallabh means somebody who is beloved of the Lord. So Hari Vallabh is beloved of the Lord. One who is loved by the Lord himself. So it has two meanings here. First, the one who is beloved of. So the one who beloved is Hari. So that is Hari Vallabh. So the person or devotee who loves Hari, Ram or Krishna, then he is Hari Vallabh. But the other meaning, actual meaning here, what Nabaji wants to portray is not the one who loves the Lord, but the one who is loved by the Lord himself. So, how much we love Hari is not that important, but how much are we beloved of the Lord is far more important. So, who is the beloved of the Lord is Hari Vallabha. So, crores and crores of people love the Lord, but whom does the Lord love? That is important. The Lord himself loves such devotee.
So if we ask Nabaji, does the Lord love only one? So he says the third word in the verse, sab. So it means that all the living entities in this world, all are dear to the Lord. In Ramayana, Lord Sri Ram says that they all are my part and parcel and have manifested from me. So I love them all equally. But those who perform devotional service towards the Lord are specially loved by the Lord. So the Lord gives such devotees their special affection or love, and such devotees, I bow down at the Lord. I venerate such devotees of the Lord. So I pray and ask for their blessings. So I pray to the devotees of the Lord who are loved by the Lord to bestow their mercy on me. So we all are sadhak bhaktas, that is, we are trying to perform devotional service. But we should always remember that whatever, no matter how much devotional service we perform, but until and unless we venerate or we don't bow down to others, then our sadhana will be soulless, lifeless. So the soul of sadhana is prarthana. In other words, without without following the without following the or without asking for the mercy of the devotees, we cannot be successful in our sadhana. So mostly devotees are engrossed in performing sadhana. No matter how much sadhana you perform, but if you don't pray or venerate, then it will be futile and we will not get the Lord. But in other case, if even if we don't do sadhana but we pray, then the Lord immediately manifest, because prayers are very powerful. Almost all the incarnations of the Lord. So I am talking about this word, prartho, the fourth word. So I am speaking on this word, prartho, that is praying or prayer. So all the incarnations of the Lord, so did they manifested because of the sadhana or because of the prayer? Almost all the incarnations of the Lord manifested because of the prayers of someone. So, on the prayers of Brahmaji, he manifested as Varaha. Whenever demigods prayed to the Lord, आयक
जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी असुखलय सुरारी सिंधु प्रिया सुतकंता। देवता क्षीर सागर के तट पर जाकर ऐसी प्रार्थना करते थे, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, और जब प्रार्थना समाप्त demigods used to pray to the Lord with closed eyes, and when they used to open their eyes, the Lord would manifest in front of them. So we have come to the conclusion, we've realized that God or Lord has manifested more on prayers. So I'm not saying that we should not do sadhana, but along with the sadhana, we should pray. Because if we do the sadhana alone, then our heart will become hard, and when we are in distress, in special in hardships of our lives, at that time we are not able to do any sadhana, but we can just do prarthana, that is prayer. So at the time when Draupadi was being disrobed by Dushasan, who had the power of thousands of elephants, she was begging for mercy from everyone, but there was no one to protect her. So at that time she didn't went for sadhana, but she started praying. So at the time of difficulty, we can only do prayer. So she says that, don't you see that I am being disrobed? So if we go to Shrimad Bhagavatam, so for so many years this Gajendra elephant was entangled for 100 years in the middle of the ocean, and he had no possibility to do any sadhana. But at the time when he was about to die, he started praying to the Lord. गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण हम तो है तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। गजेंद्र की ये प्रार्थना थी भक्तों। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रास चरण धरी पछारे, चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, और शंख चक्र गदा पद्म
गरुड़ लई सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने So Gajendra didn't perform penance or sadhana, but performed veneration or prayers. So Nabha Goswami says that I pray to all the beloved devotees of the Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ। हरि जिस भक्त को प्रेम, भक्त हरि से प्रेम करते हो तो ठीक है, तो आप सब करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन भगवान जिस भक्त को प्रेम करते हैं, So the भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूँ। the devotees who are loved by the Lord, I pray to such devotees. And what does he praise? चरण रेणु आस धरी, मुझे उन शुद्ध भक्तों के चरण रज मेरे मस्तक पर लगा। I want the dust of the lotus feet of such devotees on my head. उन भक्तों की चरण रज की आशा है मुझे, And that is what I expect. And that is what I desire. क्यों? Why? नाभा गोस्वामी जब उन्हें भगवत कृपा हुई, So when he was bestowed the special mercy and he was able to see the pastimes of the Lord, so he is not asking the dust of the lotus feet of the Lord, but the dust of the lotus feet of the beloved or devotees of the Lord. Why? Because a if we want to be a devotee of the Lord who is loved by the Lord, if we want to be such a devotee, and if we want the Lord to love us, then we should take the dust of the lotus feet of the Lord, of the devotees who are beloved of the Lord. Then the Lord will love us in the same way. So we should always desire the dust of the exalted devotees or beloved devotees of the Lord. So the dust of the lotus feet of such devotees is glorious, and let me share more with you. So I'm discussing about the dust of the lotus feet of the Lord and what is the strength of that. So once a king in Saurashtra whose name was Rahugan, he thought in Gujarati that I have already indulged in all the material opulence of this world, but now I need spiritual knowledge, and where shall I get this knowledge? And there Kapil Dev was in Gangasagar performing austerities. So Rahuguna started traveling to find Kapil Muni in search of the self-realization, the knowledge of self-realization. So as you all are aware of the pastime, on his way, one of the palanquin bearer got sick, and Jad Bharat was standing in the farm. So he was taken, and Jad Bharat was trying to protect the ants. And when this king Rahuguna wanted to beat Jad Bharat, then Jad Bharat
replied that you want to punish me and पिछले 10 दिनों से ठंडी गर्मी वर्षा हम लोग सहन कर रहे हैं, you हमें कोई want प्रॉब्लम नहीं है, और me to आपको clear पालकी में my बैठ brain. के प्रॉब्लम हो रही We है। are आपका मन suffering आपके since वश में last नहीं है, 10 days आपकी and you are बुद्धि आपके inside and कंट्रोल yet में you नहीं है। are getting distressed. So इलाज your तो mind is आपको not अपना controlled. कराना So चाहिए, हमारा नहीं। you need to और मुझे be मारोगे, आप मुझे मार कर treated. नहीं मार सकते, क्यों? So क्योंकि you आत्मा want to को beat न me, तो but जलाया you जा सकता है, न cannot काटा जा do सकता the है, same because न the पानी soul के द्वारा भिगोया जा सकता है, cannot be न वायु killed, के द्वारा drowned. सुखाया जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। राजा रहुगण एक So the king Rahuguna, उठाने वाले मजदूर के who, मुख से when he इतने बड़े तत्व की बात thought, सुना, heard about such the निश्चय ये deep कोई साधारण मजदूर नहीं है, ये कोई ज्ञानी है। meaning by अब गुजरात a के राजा palanquin का इतनी bearer, तो बुद्धि थी he कि भाई कहीं realized that अपराध he is तो नहीं not हो any रहा है। ordinary person राजा but a रघुवीर ने कहा self-realized कि soul. मुझे जल्दी बता So दो he आप realized हो that कौन। he said that please दिखने में मजदूर की introduce तरह ही है, yourself. लेकिन आपकी वाणी Although जब मैं सुन रहा हूँ तो आप you कोई are साधारण आदमी working नहीं as an ordinary laborer, but रहुगण वहां पर after खड़े listening हैं you, I realized that you are not any ordinary कि person. नाहम विशंके सुरराज वज्रात न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। ये सौराष्ट्र का राजा रहुगण यमराज के दंड This से नहीं king डरता, of शिव जी के त्रिशूल से Rahuguna नहीं डरता, is not न afraid अग्नि of इंद्र सूर्य, Yama मैं or किसी से नहीं Shiva डरता, or लेकिन other हाँ demigods, but शंके विषम I ब्रह्म am अवकूल scared बाणात, मैं किसी or वैष्णव afraid अपराध of से तो अवश्य डरता हूँ। the offenses किसी against the साधु के अपराध से exalted डरता हूँ, devotees कहीं of आप the साधु Lord. तो नहीं हो। So, तब जड़ भरत जी कहते हैं राजा भरत का नाम सुना है? so बोले हाँ, Jad Bharat replies मैं that, बहुत have you heard पहले about पूरी the धरती king के राजा Bharat, हुआ करते who थे। was the मैं king तो of एक खंडिया the राजा, whole एक स्टेट का राजा हूँ, लेकिन वो हमारे बाप के universe? बाप हुआ करते थे। So Rahuguna बोले वो says मैं that ही हूँ। रहुगण he used to भरत पूरी rule धरती के the बादशाह? entire बोले हाँ मैं वही। earth, and then राजर्षि भरत ने अपनी Bharat कथा says that सुनाई I am the same Bharat. And और then तब रहुगण को एक बहुत सुंदर बात बताई King जो मैं Bharat आपको told his दिखाना चाहता हूँ। pastime, इस and पॉइंट पर नीचे जिन this is चरण what रेणु he आस has धरी, told. So here I am भक्तों connecting के it चरण to रज the की क्या महिमा है। point of तब the राजा Charan, रहुगण that is कहते the glory of हैं, the जड़ भरत जी कहते dust of the lotus feet of the Lord, of the devotee, sorry. हैं, रहु गणेत तपसा न याति न चेजया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसानेव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकः। रहुगण तपसा न याति। रहुगण तुम जिस परम अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, So he tells that Rahugana, the knowledge of self-realization that you want to attain cannot be attained by penance or austerity, or that is sadhana, but वो परमार्थ का ज्ञान and वैदिक कर्म कांड के द्वारा भी and नहीं it मिलता। cannot be achieved even by the फिर आगे Vedic कहते karma हैं, kanda "छंद processes, निर्वपणाद", वो परम अर्थ का ज्ञान and that self-realization or किसी को knowledge भोजन खिला दिया, किसी को वस्त्र दे or the दिया, absolute ऐसे truth, परोपकार करने से भी नहीं मिलता। such वो cannot परम अर्थ be का even ज्ञान get by गृहाद्वा, helping घर others, में that घर is छोड़ देने paropkar, से भी नहीं मिलता। and nor by ये leaving घर your छोड़कर निकले home. हो और आप समझ रहे हो कि मुझे वो परमार्थ का ज्ञान मिलेगा। You have केवल left घर छोड़
the home and you think that you can achieve or attain that knowledge, or just by performing charity, you will not get it, nor you will get it through karma kanda processes, nor by performing austerity, and nor you're going to get it by just reading the Vedas or the Holy Scriptures, nor you will get that knowledge by praying to the sun, the ocean, etc. So you can only get that by just through the dust of the holy lotus feet of a devotee. By the time you don't drown yourself in the dust of the lotus feet of an exalted devotee, you won't be able to get that self-realization or absolute truth. So this knowledge of absolute truth cannot be attained by just reading the scriptures. They become knowledgeable jnanis, but they still don't get self-realized, nor by charity, nor by leaving the home or performing penance or austerity. We get it only by the by taking the dust of the lotus feet of the Lord, of the devotee. Sorry. So if we want to elaborate it further, so once Hiranyakashipu, Prahlad and his Guru Chantamrut were sitting, and they said that in your eyes, praying to Lord Hari is the best. So he says yes. भगवान में लगती क्यों नहीं है? So they say that then why people are not able to focus on the Lord. And in Shrimad Bhagavatam, Prahladji replies, this is the 32 verse from Shrimad Bhagavatam. So if you want to understand this one, then we have to go to the second line. भगवान श्री कृष्ण का चरण कैसा है? So the feet of the Lord are like, सभी प्रकार के अनर्थों का नाश करने वाला है. It is the destroyer of all kinds of distress and obstacles. ऐसे भगवान श्री कृष्ण But के चरणों में तब तक अपनी मति नहीं लगेगी. We cannot focus on the lotus feet of such Lord. The verse starts from Na Ekam. That is, we won't be able to focus or concentrate on the lotus feet of the Lord Tavat till the point till the point Mahiyatam, that is, the devotees of the Lord's dust of their feet, lotus feet, we won't get the focus or concentration towards the lotus feet of the Lord. So this is a similar philosophy which is being shared again or stressed upon again. So if we get the dust of the lotus feet of the devotees, then we get focus. We are able to focus on the lotus feet of the Lord. So if we want to focus ourselves on the Lord, lotus feet, then we should venerate and take the
and decorate our head with the dust of the lotus feet of the exalted devotees of the Lord. So, even Jad Bharat has asked for the dust of the exalted devotees. Similarly, Prahlad Maharaj also has asked for the same. लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र These all asked for the dust of the devotees of the Lord. So, but what about Uddhav, the friend of Lord, who is highly intellectual, who is the best friend of the Lord, who has spent all his life in association of Lord Shri Krishna himself? Such Uddhav ji himself asks or desires for the dust of the lotus feet of the exalted devotees. हैं, लेकिन कृष्ण के मित्र सखा उद्धव भी कृष्ण के शुद्ध भक्तों की चरण रज की कामना करते हैं. ये थोड़ा समझने वाली बात है. जो बंदा This we need to understand this. The person who is always with the Lord, who already has got Lord himself, then why is he desiring the dust of the lotus feet of the devotees? Uddhav ji desires and speaks this verse. महो चरण रे नुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतोषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमा रियपतं चहित्वा भेजोर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः वृमीज्ञा आसामहो चरण रेणु जुषा महम श्याम. ओहो, आसाम, आसाम माने ये ब्रज की गोपियों के ब्रजवासी Asa means that Asa Maho Charan Renu means that I desire the dust of these gopis, and although I will not get that, so let me be a plant or grass in Vrindavan, and I will be bestowed with the dust of the feet of its devotees. And why does he ask for the same? It is mentioned in the third line that these Brijvasis or the devotees of the Lord, Dustyajam, this which is extremely difficult to detach ourselves from, and that is Swajan. अपने पति को त्यागना, बच्चों को त्यागना, समाज को And त्यागना, to detach ourselves from our family और आर्य पथ को त्यागना, एक कुल and परंपरा को त्यागना बड़ा कठिन to है. detach ourselves from our दुस्त्यजम जो जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, heritage or जैसे अपने स्वजनों को principles त्याग of दिया our clan, ब्रजवासियों ने, but these अपने आर्य Brijvasis पथ को त्याग दिया ब्रजवासियों ने, let go of their family members, their मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए. अरे their जिस प्रेम principles को आज तक just to get the love of the Lord Shri जिस Krishna. प्रेम को खोज रही है, So that love, which even Vedas and the Shrutis are not even able to find them. उस प्रेम को प्राप्त कर गई Such love they have attained अपने
just by surrendering everything at the lotus feet of the Lord. And I want the dust of the lotus feet of such devotees of the Lord. This is what Uddhavji desires. ऐसे भक्तों की चरण रज यहाँ पर मांगी जा रही हैं। अब देखो, जड़ भरत जी ने चरण रज मांगी। So Jad Bharat ji asked for the dust of the devotees. Prahlad ji, even Uddhav ji has asked for the same benediction. But till now it is still understandable. But the Lord Himself also asks for the dust of the lotus feet of His devotees. Let's see how powerful the dust of the devotees is. Lord Shri Krishna tells Uddhavji himself in this verse, Oh Uddhav, who don't expect anything from me, and he never expects anything in return. He has no expectation, nirpeksham. Such a devotee, one who always remembers or focuses on my pastimes, and who all senses are in control, and who sees everyone with equanimity. So such devotee who is equanimous towards everyone, whose senses are controlled, who has no enmity towards anyone, and he is equal to all the devotees. And I walk or I follow them. And for how much time? So the Lord says that I walk behind them eternally, Nityam. So if Uddhavji asks why you follow them, so he says that I want to take the dust of such devotee. Even Lord Himself wants the dust of His own devotees. And if Uddhavji asks that, why do you want it? So Lord Krishna replies, to become purified. Puyaye means to purify. The dust of my devotees' feet is so pious and pure that it can purify me. Although Krishna himself is purity, but yet he says that. So, Nabhaji has written this Bhaktamal, and I am just telling in a short form. But this is the glory of the dust of the lotus feet of a Vaishnava or exalted devotee of the Lord. So there can be a question that the Lord desires the dust of what kind of devotees? So one one saint has written
in front of this, the words in front of your screen. आग भी लगाओ बांधी कापर दुसाल सो, गिरी सो गिराओ काली नाग से दसाओ, हा प्रीत ना छुड़ाओ गिरिधारी नंदलाल सो। ऐसे भक्त की चरण रज भगवान चाहते हैं। अब ये तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में यदि ये So let me tell you in short. तोक पहराओ, भक्त कहता है, The devotee says, मुझे तोक पहना दो या मेरे पाँव में बेड़ी लगा दो, you can चाहे मुझे कितना भी बंधन से बांध दो, tie me up in whatever manner you like, मेरे शरीर की खाल निकाल दो, or you can या फिर मुझे विष पिला दो, skin me, माझी धार में or या फिर मुझे make me drink poison, or डुबा दो, फेंक दो, you drown me in मेरे a शरीर पर पत्थर river, कर मुझे समुद्र में डाल दो, or you put me in the sea या with एक the कमरे में बहुत stone, सारे बिच्छू लाकर उस कमरे में and बिच्छू के or ऊपर मुझे सुला दो, leave me in a room filled with एक scorpions, कमरे में मुझे डालकर चारों ओर से मुझे आग लगा दो, or if you या बहुत even बड़े burn पर्वत me पर ले जाकर उस पर्वत से गिरा दो, in a house, or या even if you make me fell डसा दो, from the चाहे आप cliff मुझे of जो the करना है mountain, कर लो, लेकिन or गिरधारी नंदलाल से प्रेम you मैं नहीं छोड़ूंगा, let the snake bite चाहे me, जो but करना है कर लो, still चाहे कैसे I भी will मुझसे not प्रेम कर leave लो, मैं नंदलाल my के devotional प्रति प्रेम service को नहीं त्यागूंगा, or love मैं उस towards प्रेम को नहीं छोड़ूंगा। Nandlal, that is तो ऐसे भक्त Lord के Sri पीछे Krishna. भगवान So चलते हैं, the ऐसे Lord भक्त से follows भगवान such devotees, प्रेम करते हैं। and आइए such devotees are अब loved सार by में the मैं Lord. आपको ले जाऊं, हरि वल्लभ सब प्रार्थो, हरि जिस भक्त से प्रेम करते हैं उन भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूं। So he says that I pray to the beloved devotees of the Lord, and what do I pray? That I तब नाभा गोस्वामी desire पूछा गया, or pray to get the dust of शुद्ध भक्त the कौन है, feet of the Lord. थोड़ा लिस्ट तो बताइए। And then आप he यहाँ पर जिसका जिक्र कर रहे हैं enumerates कि भगवान उन the भक्तों के devotees पीछे who are चलते loved हैं, by the Lord, भगवान उन भक्त की चरण रज अपने मस्तक पर and लगाते हैं, the भगवान अपने आप को पवित्र करते devotees हैं who भक्त के पीछे follow चलकर, तो वो भक्त such है कौन, devotees उसका and लिस्ट gets तो दो। purified. So तब what नाभा is, गोस्वामी ने who जब are these लिस्ट devotees? निकाला, So तो Nabaji पहले हनुमान, gave this जाम्बवंत, list. He सुग्रीव, wrote Hanuman, विभीषण, Jamvan, और Sugriv, पांचवें Vibhishan, नंबर पर and the है fifth number हमारी is शबरी माता। Shabari Mata. श्री शबरी मैया की पूरे भक्तमाल को लिखने से पहले अनाउंस So कर रहे हैं नाभा in गोस्वामी, the beginning itself, और he's भक्तमाल announcing के उस भक्त चरित्रों में शुद्ध भक्त about की श्रृंखला the में पांचवें exalted नंबर पर devotees of the Lord, श्री शबरी माता को and रखा गया। on the fifth number ये is वो Shabri शबरी Mata, माता है and this is जिसको the Shabri भगवान Mata प्रेम करते हैं। who is loved by शबरी the Lord भगवान से प्रेम Himself. करे, ये तो एक साधारण सी बात हो जाएगी, लेकिन Shabri loves शबरी the का Lord is चरित्र है, ordinary, भगवान but उसे प्रेम करते the हैं, Lord loves भगवान her, उसके पीछे makes her चलते हैं, extraordinary. भगवान उनके चरण रज की कामना करते हैं। ऐसी शबरी माता का चरित्र And हम such आप बैठकर श्रवण Shabri करने जा रहे हैं। Mata's फिर pastimes आपने and शबरी माता की characteristics we are परिक्रमा going की, to listen. अब So हम now शबरी माता के we चरित्र have की ओर just बढ़ेंगे। हम circumambulated रोज Shabri परिक्रमा Mata. करेंगे, हाँ भाई, So we'll रोज शबरी माता की daily महिमा circumambulate और उनकी Shabri परिक्रमा, Mata और फिर हम and उनके sing His चरित्र और सब glories, कुछ श्रवण her करेंगे। glories. आइए शबरी चरित्र की ओर हम सब आगे बढ़े, उससे So पहले एक let's छोटी सी move सूचना towards और the शबरी characteristic माता of की ओर आगे। Shabri ji. हरे Before कृष्णा that, an हरे announcement. कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, thank you very much, Fuji.
बहुत ही सुंदर आज इस द्वितीय दिवस की कथा में हम माता सबरी के इस चरित्र के ऊपर प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और सर्वप्रथम तो यहाँ पर उस अग्रदेव की ब्राह्मण की कथा, वैष्णव की कथा, जिनकी जो सेवा करने वाले संत थे, नाभाजी संत, उनकी महिमा आस्वादन करवाई। और उनकी महिमा से उन्होंने जो सुंदर ये चरित्र लिखे हैं सभी भगवान के प्रिय भक्तों के, जो हरि वल्लभ सब प्रार्थो, भगवान स्वयं इन सब के पीछे मतलब भागते रहते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चरणों की रज लेने के लिए। तो चरण रज की बहुत ही सुंदर महिमा यहाँ पर हमने इस प्रसंग में श्रवण की, जहाँ पर राजा भरतहरि भी बताते हैं राजा रहुगण को, बिना रजोभिषेकम महत्पात, महात्माओं की चरण रज की सेवा के बिना भक्ति को प्राप्त करना संभव नहीं है, या भगवान के दर्शन करना संभव नहीं है। तो ऐसी सुंदर कथा हमने यहाँ पर गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण की। और बहुत ही सुंदर श्री चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे वर्णन आता है कि यदि हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उपाय है। तो वहां पर बताते हैं कि भक्त पद धूलिया, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। भक्ति मार्ग में शीघ्र उन्नति करने का एक बहुत बड़ा शॉर्टकट दिया है यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में, कि भक्त पद धूलिया, भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त, उनके चरण रेणु को अपने सर पे लगाना। और भक्त भुक्त अवशेष, और भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा जो महाप्रसाद है, जो उनके द्वारा छोड़ा हुआ प्रसाद है, उनको ग्रहण करना। That is the one of the thing that also can lift us, into rapid भक्ति में। और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त भक्त धूलिया, भक्त पद जल, भगवान के चरणों से भगवान के भक्तों के जब चरण अभिषेक करते हैं तो वह जल, और भक्त भुक्त अवशेष, जो वो अवशेष जो हमारे महात्मागण प्रसाद लेने आते हैं, छोड़ते हैं, उसको ग्रहण करना। यही 3 महाबल, ये 3 भक्ति में उन्नति करने के एक महाबल है, बहुत ही सुंदर साधन है। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर अनेक प्रसंग से श्रवण कराया, जहाँ पर भगवान के भक्तों की चरण रेणु की महिमा हमने श्रवण की। और स्वयं भगवान भी गाते हैं अपने भक्तों की महिमा और उनके चरण की महिमा, चरण रज की महिमा। सो थैंक यू प्रभु जी। और बहुत सुंदर यहाँ पर हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रार्थना के ऊपर बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कि कैसे यदि हम सब साधक भक्त हैं तो प्राय हम सब रोज सुबह यहाँ पर हमारी चर्चा में भी हरि नाम जप करने बैठते हैं सुबह 5:30 बजे। बहुत सारे भक्त हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर कहा कि यदि हम हरि नाम जप करते हैं परंतु यदि भगवान से प्रार्थना नहीं करते, प्रेयर मोड में वो सारे प्रार्थना भजन नहीं करते हैं, सो कहीं ना कहीं वो जो हमारा भजन है वो हमारा ईगो बन जाता है और हमारा पतन करा देता है। तो whenever we sit for chanting, before we chant we should pray, and after chant we should pray कि भगवान हमने हरि नाम करने जा रहे हैं, कृपया हमें हमारा मन लगे पहले तो इसमें, इसके लिए प्रार्थना करनी है। और उसके पश्चात भगवान को धन्यवाद करना है कि अच्छे से हम माला कर पाए। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बताया कि कैसे प्रार्थना में बहुत सुंदर पावर है, क्योंकि जब हम ऐसी अवस्था में आ जाता है जहाँ पर हमारा हाथ पांव शरीर काम नहीं करता है, उस वक्त हमारा मन काम करता है। वही तो यदि मन अच्छे से भगवान में लगा है, अच्छे से प्रेयर करना आता है, that can save us. So thank you प्रभु जी so much for this wonderful आज की इस कथा की जो प्रथम पार्ट में यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर भगवान से प्रार्थना करने की विषय में श्रवण किया तथा भगवान के भक्तों की धूल की जो चरण रेणु की सुंदर महिमा अपने आस्वादन कराई। सो आइए हम दर्शन करते हैं हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला की गौ माता का। तत्पश्चात हम इस शेष कथा को श्रवण करेंगे प्रभु जी के मुखारविंद से। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही सुंदर दिवस है यहाँ पर। आज बहुत ही सुंदर श्री राधा गोविंद गौशाला में गौ माता की सेवा करने का मैं पुनः अवसर मिला। आज हमारे परम मित्र, हमारे भाविन प्रभु जो कि मुंबई घाटकोपर से हैं, उनका जन्म दिवस है।
तो उन्होंने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर गौ माता की सेवा का भी सहयोग किया है। तो हम विशेष प्रार्थना करते हैं उनके लिए हमारे समृद्ध चर्चा परिवार की ओर से कि वह इस प्रकार भगवान की भजन भक्ति में सदैव लगे रहें और इसी प्रकार सेवा करते रहें तथा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। तो ये सुंदर सेवा की है उन्होंने। साथ ही साथ हमारे जो पत्नी परिवार हैं, विशेष उनका सहयोग है इस भागवत कथा के अंतर्गत, जहाँ पर हम यहाँ पर गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं। सो रिसेंटली हमें पता है कि देयर इज अ डिजीज कॉल्ड लंपी वायरस जो कि स्प्रेड हो रहा है, विशेष ये गौ माता को इफेक्ट कर रहा है। और वी बड़ी कृपा है भगवान की, भक्तों की, आप सबकी, कि हम सब प्रायर वी कुड टेक प्रायर प्रिकॉशन, क्योंकि ये जो डिजीज है वो धीरे धीरे गौ माता की हत्या कर देता था, उनकी जान ले लेता था। जानलेवा बीमारी है बहुत ही। तो बिकॉज ऑफ यू ऑल वैष्णव वी कैन हम लोग पहले से ही इसकी ध्यान रख रहे हैं प्यारे से, और वैक्सीनेशन हमने हमारी सारी गौ माता को करवा दिया, जिससे कि ऑल गौ माता आर नॉट सेफ। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप सुंदर इतना सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हम सब ये सारी सेवा कर पा रहे हैं, गौ माता का ख्याल रख पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और विशेष धन्यवाद हमारे इस पत्नी परिवार को कि जिन्होंने इस भागवत कथा के दौरान इतना सुंदर सहयोग किया है कि not only go matas but we are daily able to serve those wonderful Vaishnavas as well. So thank you very much once again. आइए हम निवेदन करें श्रीमान लाल गोविंद जी से इस शेष कथा को श्रवण कराएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। माइक प्रभु जी। माइक ऑफ है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत शबरी चरित्र। So we are discussing about Shabari Charitra in Shrimad Bhagavatam Katha. So previously शबरी के पूर्व जन्म का इतिहास, we have discussed about the last शबरी और कोई नहीं, birth of Shabari Mata. She is none other than Lakshmi ji, एक अंश से who incarnated माता के रूप में प्रकट हुई है। in one of the forms as Shabari Mata. किसी विशेष सिद्ध संत ने कही, And it was said by a great saint भामिनी संबोधन and से by the word सार्थक होता है। Bhamini, by which Lord Ram addresses शबरी माता her. के पूर्व जन्म के विषय में जिस कथा को आप हम सब जानते हैं, So all ये कथा वो है the katha that we know about her birth, में शबरी माता that we all are aware that in the past life Shabari Mata was a queen of a king. किसी राजा की महारानी थी। शबरी माता पूर्व जन्म में बहुत रूपवती थी, And she was extremely beautiful. और इसके कारण लौकिक मर्यादा में उन्हें And because of that, she had to follow the जन्म हुआ था। she has to follow the Vedic injunctions. So although she used to live in the palace, she was always kept रूपवती थी, लौकिक in मर्यादा में थी, उच्च कुल में जन्म ली थी और महल में सदा पर्दे में रहती। parda, or her face was always covered. जिस राजा के साथ इस रानी And का विवाह हुआ, the king with whom she was married, वो राजा डिवोटी नहीं था।
he was a non-devotee. और ये शबरी पूर्व जन्म And में this Shabari पूर्ण सात्विक था, संतों के was प्रति बड़ा भाव था, totally pious संतों की सेवा and करने had की उसे बड़ी कामना रहती थी, संतों great के desire साथ to बैठकर भगवत कथा serve सुनने की बड़ी the इच्छा devotees रहती of the Lord. She always wanted to hear the pastimes लेकिन of the Lord पति through such भक्त devotees. नहीं होने के But कारण because her husband was a ये संभव non-devotee, नहीं हो पाता था. it was not possible for her to अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि पत्नी indulge इतनी बड़ी or डिवोटी है, listen to the तो pastimes of क्या the Lord. प्रॉब्लम है? So people can ask that if a wife is a devotee and the husband is not, then तुलसीदास जी why ने एक बहुत सुंदर कहा, husband can be distressed or what तुलसी is his पूर्व problem? पाप से हरि Tulsi ji चरण writes, सुहाय, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर से जोर से भूख विदा हो जाए. so Tulsidas ji says that रसगुल्ला बनाए if बंगालियों के लिए, हम गुजरातियों के लिए if ढोकला we, बनना चाहिए. if we make a rasgulla योगेश भाई, or a dhokla, જો કે તમે તો નેરોબીમાં છો ને, खैर, लेकिन कितना भी अच्छा ढोकला बनाया हो, so ऊंधिया no बनाया matter हो, how much श्रीखंड tasty बनाया हो, the food will be or would be, लेकिन खाने वाले को बुखार है तो, but if the खाने person वाले is को suffering उल्टी है तो, with fever or is कितना भी sick, अच्छा भोजन then no matter how अच्छा much नहीं लगेगा. tasty the अच्छा, food अच्छे की बात is, छोड़ो, he will भोजन not भी enjoy एकदम it. से चितरी चढ़ेगी. चितरी चढ़ती है, He हमारे में चितरी चढ़ती है. he will feel like उसको देखकर vomiting. थोड़ा सा After seeing it, he घृणा get होगी, अच्छा नहीं लगेगा. repelled by the food. भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन Although the रोग food है क्या is करें. sumptuous and tasty, but लगाकर because of his भजन sickness, he भक्ति cannot enjoy it. भगवत नाम Similarly, चिंतन, ये भागवत कथा बहुत अच्छी चीज है, this devotion of the Lord is लेकिन पूर्व में इतने very good. पाप किए But हुए हैं, if a person has performed उस so many पूर्व के sins पाप के in कारण his past भजन life, सुहाता नहीं then है, भक्ति he अच्छी नहीं लगती or she है. cannot enjoy the devotional service of the Lord. They are not कई attracted बार to the कुछ same. लोग भागवत कथा में आते हैं, Sometimes लेकिन 5 मिनट बैठ people नहीं पाते, वो 5 come to मिनट the में Bhagavad भागवत Katha बोलते रहते हैं and they और फिर sit the जब Bhagavad खत्म Katha करते हैं, and they just cannot focus, and after शायद some वो भी time they just बैठना leave. चाहता है, लेकिन उसका So पाप जो है ना, he wants उसे to sit, बैठने नहीं but देता. because of his past deeds, he is unable to do इसलिए so. तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए. That is what Tulsidas पाप writes, का बोरा इतना भारी होता है, that the sins भजन are नहीं so करने heavy देता. that we are और not इसीलिए able श्रील to प्रभुपाद जी perform ने क्या टेक्निक devotional अपनाई, service towards the Lord. जब वो अमेरिका So, में आए तो so जानते what थे was the कि ये सब technique लोग पापी Prabhupada हैं, तो श्रील प्रभुपाद used? जी ने Because he knew सबसे that बुक all of them डिस्ट्रीब्यूशन were करवाया, impious. रथ यात्रा So के लिए रथ बनवाया, he जैसे started जैसे लोगों को using सुखरूप them में in लगाया, the उन service सुखरूपी of से the उनके Lord पाप खत्म by हुए. और distributing फिर books प्रभुपाद or by आके making फिर the सब लोग chariot of the भक्ति में Lord, लगते etc. हैं. And once ये the प्रोसेस है. हमारे they देश got में हम लोग some सोचे हम good कैसे भक्ति करते हैं, हमारे बच्चे भी karma, वैसे then भक्ति करें, they बच्चे were भी वैसे, able लेकिन वो to पाप का बोझ perform लेकर आया है. devotional तो उसे service कितना of the भी Lord. मनाओगे नहीं कर So पाएगा बेचारा, वो चाहकर भी नहीं कर पाएगा. even if they want, they cannot perform because तो they हमें have so उसे many मदद करनी चाहिए. क्या sins मदद करनी accumulated चाहिए? from their उनके past पाप lives. को धीरे धीरे हमें खत्म करना चाहिए. So gradually we should try ऐसा to तुरंत remove उसको their कंट्रोल करने sin. का, भाई तुम तो We कुछ काम के नहीं हो, should नीच not काम करते हो, try मोबाइल to हाथ में लेते हो, ऐसा नहीं. control them or उनके पाप abuse them, उनका उनका जो अकाउंट है बहुत but लंबा चौड़ा है. we should अगर try वो काम बन to गया तो get उसे them सपोर्ट करना चाहिए. do some यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ. good deeds to support और their इसका उपाय devotional तो service. यही है कि साधु सेवा करें, And हरि नाम लें, the solution is to chant the holy names, भजन to में serve the मग्न devotees रहना of the है. Lord, and gradually they will get शबरी बिचारी, सॉरी the शबरी taste पूर्व जन्म में for रानी थी, devotional service. So this संतों Shabari के was प्रति a श्रद्धा queen आस्था थी, and she was dedicated परंतु towards the devotees of the Lord and saints, उनके पति के कारण yet her साधु husband सेवा नहीं कर पाते. was a और ये non-devotee and कमी she शबरी couldn't को बहुत खटकती serve थी.
the Lord. And this is what कुल में मेरा जन्म हुआ, Shabari always मेरे पास felt इतना कुछ होने के bad बाद about. भी And she was thinking that although I have so much, yet I'm unable to serve the devotees of मन the में Lord. ये चिंता चल ही रही She थी had तब तक this हाँ, distress कुंभ and का desire पर्व in her है। heart. हाँ, हाँ। And during the time of प्रयाग में Kumbh कुंभ का पर्व, प्रयाग में कुंभ came. लगा है So in Prayagraj, the और Kumbh दुनिया भर was के साधु संत arranged, महात्मा अपने and अपने all the वाहनों से sages and और saints निकल कर came तीर्थराज प्रयाग में स्नान to करने लगे। Tirthraj Prayag शबरी के मन to में take the शबरी holy dip. शबरी पूर्व जन्म की बात कर रहा हूँ। इस So we are पूर्व discussing जन्म के about the मन में pastime मन में of बड़ी कामना आई Shabri's कि मैं भी last प्रयाग or जाऊंगी, past birth. संतों So का she दर्शन had this करूंगी desire और गंगा that जी I के will सरस्वती also में स्नान go करूंगी, to क्योंकि Prayagraj and त्रिवेणी की take the महिमा holy है dip, और त्रिवेणी में भी जो गंगा because है Triveni is उसके विषय में कहते हैं glorious and the glory of Gangaji is mentioned. गंगा जी ने काठड़े जाऊं निर्मल एना निरथी नाऊं, गंगा जी ने काठे जाऊं निर्मल एना निरथी नाऊं, पंडना जो होई पाप माड़ी तो ने दूर कर जो दयाल, पंडना हो जोई पाप माड़ी तो ने दूर कर जे दयाल, आवा छिए तारे आश्रे माड़ी ने आवा छिए तारे आश्रे माड़ी वार कर जे तत्काल, गंगा जी ने काठड़े जाऊं निर्मल एना निरथी नाऊं, गंगा जी ने काठड़े जाऊं निर्मल एना निरथी नाऊं। मन में कामना हुई, So she had this desire to go and visit the Prayagraj and take a holy dip in the Ganges. Similarly, so when she had this desire, even we should take some time and visit the holy places. The whole year we work hard to earn money, but at least once or twice in a year we should go to the holy places like Vrindavan, Mayapur, Mathura, and Jagannath Puri. So she requested her husband and he gave the permission, but he arranged great procession. And even when she reached Prague, yet there was so much security that she couldn't get an opportunity to visit the sages and saints. She was so much surrounded by people. She had so much security that she couldn't even associate with the devotees or sages. And she couldn't even see the devotees. Ultimately, while taking the holy dip in the water, this queen decided that living such a life, it is better to die than to live like this. So she prayed with folded hands that, "Oh Prayagraj, to kill ourselves is a great sin. I am aware of that. But this is not suicide, but this is my surrender. And I have just 3 desires. Please bestow your mercy that I don't get a birth in
in a of a in the family or clan of kings, but in the clan of the low class. तुलसी भगत स्वपच भलो जो जपे रैन दिन रात. कितना भी ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, So no matter how much higher clan you're born in, but if you don't take holy birth in such a family where nobody chants the holy name, but it's better to be born in the family of a Chandal if they chant the holy names of the Lord. So what is the use of so much opulence that you're not able to chant the holy names or sit down in the katha? So she asked for a benediction that she should get birth in a lower society. And I don't want to, because I was so beautiful that I was married to this king and I got entangled. It was the business of a great loss. So please make me ugly next time. And in the if I take the rebirth, then I should always have the love at the lotus feet of the Lord. So she took the dip first, the second, and then third. She never came up, and she took Jal Samadhi, or she surrendered to the waters. And as she prayed, similarly she got the next birth. She was born in Shabarkul. Nobody knows her real name, but because she was born in Shabar clan, therefore people called her Shabari. So it's just that she was just born by Shabar clan, but she was more pious than even the Brahmanas and saints. शबरी का जन्म शबर कुल में हुआ. बचपन से ही And since childhood, she used to help her parents and she used to cut wood in the forest and collect it for her parents. She used to work day and night. But the devotional service that she performed in her last life was still there. No matter how many yugas pass, but the seeds of bhakti or devotional service that we perform, it will fructify no matter in what clan they are born. शबरी के मन में भगवान के प्रति लगनी लगी थी. She had attachment towards the Lord, but she never revealed it. And she said that I will not marry, because last time when she got married, she got so much entangled. But there was a time when children will never say anything against their parents, and they used to follow what
their parents have told them to do. शबरी बड़ी हुई, Even in the Shabur class, विवाह का समय people आया। used to listen to their शबरी की parents. माता पिता Now, ने even in the बेटी higher का विवाह तय soc- कर दिया। society, people, और children don't विवाह के listen to अगले their दिन parents. शबरी ने देखा So she was कि उनके घर में लगभग arranged for 100 a marriage, जानवरों and को she बांध कर रखा है। saw, prior मन में to सोचा, her marriage, she saw that मेरी 100 शादी of है, animals इतने were सारे being जानवर tied, मेरे घर पर बंधे हुए and हैं। she saw that the अब day वो before, पाकर शबरी all ने these अपनी animals माँ were से tied पूछा, माँ, to her. ये इतने सारे So जानवर हमारे घर she पर क्यों हैं? asked her mother, why all शबरी these को animals are बताती है, tied in our home? बेटा हम तो So शबर she हैं, replied that we are और Shabur, हमारी जाति में ऐसा रिवाज है and कि in जब कोई our महाभारत को लेकर आता है तो उसे मांस खिलाया जाता है। clan there is a तो ritual ये सारे that जानवर कल the खाएंगे, मरेंगे groom और इसका मांस हम बरातियों is को खिलाएंगे। given इतना सुनते ही the शबरी meat. के हृदय में जो धक्का लगा, When she heard that, माँ के she सामने तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन was शबरी मन में सोची कि मेरे एक grief जन्म का stricken. विवाह और उसमें She इतने didn't सारे said anything to जानवरों her की mother. जान जाएगी, She said that just for इतने सारे performing पशुओं one की marriage, जाएगी। so many animals will be नहीं killed. नहीं नहीं, ये गलत है, This ये is गलत not है। right. शबरी रात भर सो नहीं पाई। She couldn't sleep whole night. जब घर के सारे लोग सो गए तब And शबरी when अपने everybody कमरे में went to गई sleep, she और went चुपके से शबरी ने उन to जानवरों का बंधन खोल दिया और she घर went का out दरवाजा and खोल दिया untied all those animals और सारे जानवरों को वहां से मुक्त कर दिया। and she freed them वो all. बेजुबान पशु, वो बेजुबान जानवर जिस पर तलवार चलने वाली थी, शबरी ने All उसे these छोड़ animals दिया। who were about वो to be बेजुबान killed पशु ने were जाते freed. जाते शबरी को आशीर्वाद दे दिया। And बोल तो नहीं पाते थे, लेकिन अब although they भगवान couldn't से speak, मानो वो but जानवर yet कहते by हुए, their शबरी eyes, तूने हमारा they बंधन told that खोला है, you जा have freed us. भगवान तेरा बंधन खोल देंगे। The Lord will मोटे जी free आशीर्वाद you. देकर जाते हैं। This is our शबरी benediction. तुमने हमको बचाया है, You have saved us. गुरुदेव भवसागर में डूबने से तुमको बचाएंगे, हमें So you ऐसा will आशीर्वाद get देते हैं। Guru who will भक्तों, शबरी save अगर you उन from जानवरों को the मुक्त कर रही है material तो ocean मुझे तो of ऐसा ही existence. एहसास हो रहा है कि ये जानवर नहीं मुक्त हो रहे हैं, ये स्वयं शबरी भवसागर से मुक्त हो रही है। It's not इस that दुनिया में the animals are being किसी भी freed, but जीव को she मुक्त herself करना, is getting किसी भी जीव freed. को जीवन दान देना, So किसी to जीव protect की रक्षा any करना living entity, भगवान to को protect them, प्रसन्न कर लेता है। makes the Lord इस दुनिया extremely में happy. भगवान को परोपकार बहुत पसंद है The Lord और loves शबरी के इस people who गुण help से भगवान others, प्रसन्न हो गए। and on this देखो quality सभी alone, भगवान का अलग Lord अलग बंधन got होता है। मैं आपको satisfied एक with Shabri. बता दूं, सभी भगवान का अपना अपना फंडा होता है। अब देखो श्लोक में आप देख सकते हैं, So all पहली the लाइन को हम छोड़ देते हैं, दूसरी लाइन को देखो, जलधारा शिव प्रिय। laws have different शिव जी को क्या different प्रिय है? things that they like. देखो So संस्कृत आपको Jaladhara बहुत आता ही होगा। Shivpriya, शिव जी Shivpriya को क्या means प्रिय है? what does Shivji जलधारा likes? शिव He प्रिय। likes जलों water. की धारा जो है ना, ये शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर जल की धारा की That जाती is है, why the जल Shivling चढ़ाया जाता है। always have जलधारा शिव water प्रिय, ओके। falling. तीसरी लाइन में भानु प्रिय नमस्कारो। In the third line, भानु माने सूर्य Bhanu देवता, means सूर्य Surya or देवता को क्या sun प्रिय god. है? And what does he नमस्कार। likes? He likes रोज सुबह उठकर भगवान Namaskar. भास्कर को नमस्कार करना। So we should शिव जी को bow जल down की धारा to him. प्रिय है, So सूर्य Shivji देवता likes को नमस्कार water, प्रिय है, fal, और फिर अंत and में ब्राह्मणों sun मधुर god प्रिय, और ब्राह्मण को मधुर वाणी going और down. मधुर भोजन प्रिय And है, Brahmanas like ओके। sweet talk and sweet तो शिव जी को जल food, की धारा प्रिय good है, food. सूर्य देवता को नमस्कार प्रिय है, ब्राह्मणों को मधुर वाणी और मधुर भोजन प्रिय है, लेकिन भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? But what does Lord Vishnu likes? क्या लिखा है पहली लाइन में? उपकार प्रियो विष्णु। विष्णु को एक ही चीज प्रिय है So और वो Vishnu likes only one thing,
that is paropkar, or helping others, that is charity. ये विष्णु को बहुत प्रिय है। जैसे That is सूर्य what को जल, Lord Vishnu likes. सूर्य को नमस्कार, ब्राह्मणों को मधुर, वैसे भगवान विष्णु को उपकार प्रिय है। शबरी ने जब उस बेजुबान जानवरों And when Shabari freed भगवान विष्णु प्रसन्न and helped these animals, Lord Vishnu भक्तों, got satisfied and happy. कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है So in our life, sometimes we get an opportunity कोई नहीं होता। that there is nobody to आप help सब us. लोग, हम सबके जीवन में आप इमेजिन करो, भूतकाल में आई होगी, भविष्य में आएगी, ऐसी परिस्थिति में कभी-कभी And in ऐसा हो that जाता है sometime, जहाँ पर मदद करने वाले का कोई there स्कोप is ही नहीं होता, nobody, कोई there नहीं is no scope of help from anybody. याद रखना भक्तों, But do remember ऐसी विषम that परिस्थिति during that destitute time, when there is nobody to help us, at that time, किसी पर उपकार if किया है ना, we have helped somebody in our past, then वहां पर हमें काम आता है, that वो मदद करता है। helps us at that time. मैंने इसी अमृत चर्चा में वो श्लोक कहा That था, is याद what नहीं helps. रहता, मैं भूल गया, लेकिन उसकी एक लाइन याद है, अग्रे धावती धावती। यदि जीवन में आपने किसी पर उपकार किया है ना, तो If वो you have आपके आगे helped आगे someone, चलेगा, अग्रे then धावती। that will always walk इसलिए before you. लोगों पर उपकार कीजिएगा, जीव So जंतुओं की रक्षा कीजिएगा, always try to क्योंकि protect विषम परिस्थिति living में entities, वो आपका because साथ whenever देगा, there is hard time, आपका साथ it will देने वाला always है। help you. When there is no one, there will be no शबरी one ने to help you. जानवरों को छोड़ दिया, अब स्वयं सोचने लगी So कि ये Shabari जानवर left छूट all गए, these अब मेरे animals माता पिता loose, दूसरे जानवर लाएंगे, and then she thought that किसी और को my बांध कर किसी और को काटेंगे, मैं क्या parents will करूं? bring another animals and they'll kill them. मन में सोच So ही what रही should I थी do? कि So शबरी she की was दृष्टि thinking, and एक then पेड़ के she ऊपर गई, saw a tree, और पेड़ के साथ उस पेड़ का पत्ता बात कर रहा था। and on that tree the leaf was जिसका मन talking. भगवान में लगा होता है ना, A person उसको who is सारी engrossed सृष्टि in the भगवान Lord, में दिखाई देती है। he sees वो Lord पेड़ in पत्ता बात every करते living हुए entity. जो चर्चा कर रहे थे, शबरी ने वो So सुन लिया। she could listen क्या to चर्चा कर the रहे थे? conversation between the tree and the leaf. पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय। अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ते ने वृक्ष से कहा कि हे So वृक्ष, the leaf told the tree, अब मैं पक गया हूँ, अब मैं now सूख गया हूँ, I यहाँ have से गिर जाऊंगा dried up और and यहाँ I से will पवन fall के द्वारा उड़कर दूर चला जाऊंगा, and I will तो be फिर away from you, हमारा जन्म साथ में हुआ, साथ में although हम we रहे, were born and we live together. फिर हमारा मिलना कब होगा? When पत्ते ने are वृक्ष we से going कहा to कि मैं जब reunite? तुमसे डाली से गिर जाऊंगा तो मेरा तुमसे मिलना कब होगा? तब वृक्ष बोला है, Then the tree replies, तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। या घर की यह रीति है, या घर की यह रीति है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। वृक्ष ने कहा कि पत्ते, so the tree said, तुम "Oh क्यों leaf, चिंता करते हो? why ये do you जगत worry? ये संसार की This रीत है is the nature कि of this तुम material गिरोगे world, तो दूसरा that पत्ता आएगा, दूसरा one गिरेगा तो तीसरा आएगा। will go and the इसमें other will चिंता come." करने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा सोचोगे
कि तुम गिर जाओगे तो Don't मेरा be क्या होगा? इस दुनिया agitated में or distressed. कितने Even लोग if हैं, you कितने fall, लोग what हैं, will happen to दुनिया you? फिर भी चल रही है और बहुत अच्छे So से many चल people रही है। came कई and सालों तक went, मैं but नहीं the होऊंगा तो world is क्या still होगा? अभी running. होगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी जो है ना उससे तो अच्छा ही होगा। हम फोकट का ही अभिमान कर लेते हैं। So we शबरी just सुन रही थी ये जो चर्चा हो रही है, unnecessarily become egoistic that what will happen और to the यहीं world से without शबरी us. को वैराग्य And this discussion was शबरी heard ने by मन ठान Shabari, लिया, and from this she got detached मेरे घर and से निकल she जाने से मैं जाऊंगी कोई और decided, जगह। और if I leave शबरी the अपने घर home, चली somebody गई। else will come. And she left her home. कोई पूर्व तैयारी नहीं, रातों रात She घर छोड़कर had no prayer दूर arrangement, वन में घोर and वन में she चली गई। just left the home और and शबरी walked towards the deep forests. घर छोड़कर कहाँ गई? अमेरिका, And where did she नैरोबी, go? यूरोप, किसी सिटी में नहीं गई। कहने का पॉइंट ये है So the point कि here is शबरी that के विषय में she नावाजी लिखते हैं didn't कि शहर move में नहीं गई, towards शबरी any वन city में or गई, town, but she वन went का towards मार्ग the पकड़ा। forest. इरे मार्ग मारे जोवा कबीर के, इरे मार्ग मारे जोवारे, वन नो मार्ग पकड़ो शबरी है। क्योंकि भक्तों जगत प्रपंच से भरा है, जगत में अनेकों प्रकार She के, went towards the forest. So, but in this world, जगत से दूर किसी it वन has में so एकांत many स्थान में material भजन entanglements. करने में But if अनुकूलता we होती है। वैसे भक्ति तो सभी जगह पर हो सकती if है, we go भक्ति to कहीं forest, भी आप then कर सकते हो, it becomes लेकिन easier वन में to detach भक्ति ourselves. अच्छे से हो सकती है। And if we go to a forest, then we can सो शबरी attach ourselves easily to the Lord, although bhakti can be performed anywhere. जाने देते हैं, So शबरी वन में जाए, let her मैं go घर में जाऊं, to the forest. मैं रसोड़े में भोजन में जाऊं। तो यहीं पर हम विराम करते हैं। So शबरी को वन में let's रहने conclude our session कल here यहाँ today, से कथा को हम and आगे बढ़ाएंगे। tomorrow we will proceed आप further सबका from बहुत here. बहुत धन्यवाद। आप सब I'm extremely thankful to all of you who इस all कथा का श्रवण करने के लिए आ रहे हो, listen to this और आप katha सबकी इस and giving your चरितामृत valuable हृदय time, को देखकर and मेरे by हृदय में just भी अनेकों प्रकार के seeing भाव your जागते हैं। surrender and उसी भाव faith, को आपके बीच में प्रस्तुत I करता हूँ। मेरी वाणी का कोई ठिकाना नहीं present है, my कठोर कर्कश mellows. वाणी है। My शब्दों mellow में भी or my voice is थोड़ी not कमी होती ही है, लेकिन soft भाव but को आप समझते हैं। hard, भावपूर्ण आप सब but you करते हैं। do आप understand सभी my भक्तों को mellows, पाकर मैं तो and धन्य हो गया। by आपका आप जानिए। getting you और all, विशेष धन्यवाद I have करता हूँ become हमारे योगेश भाई पटेल benevolent. So I और especially उनके thank समग्र the Patni परिवार, family लंदन से नवीन भाई, रंजन from भाई, London, Naveen रमेश Bhai, भाई, Ramesh मुरली Bhai, भाई, Murli Ben, ऑस्ट्रेलिया से and अरविंद from भाई, Australia, इंदिरा Arvind बहन, Bhai, Indira जब Ben, नैरोबी थी and हमारी from शोभा Nairobi, माता। Shobha Mata. आप सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। I'm ऐसे ही बने रहिए, कथा grateful सुनिए, to all of गीता you. को धनिए। Please be connected and हरे listen to कृष्ण, Katha and जय जयकार। make your life successful. आज का Let's सत्संग conclude this session with Jai Jaikar. श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र